So waiting for some time for everyone to connect. So, so we are going to do something. So today we will continue with sine. Yes, today we will continue with sine. Sum or difference of angle. Okay. So sum of difference of angle. So before moving ahead, what will we do is that we will go through the proof. The proof in the sense we'll have drawings and drawings. Okay. Let this be the plot for sine A. This is the angle sine A, and this will be the angle for sine B. This is A and this is B. Okay. So what will happen is that uh, right now we have to draw more lines and lines. So we'll continue with that. We have to work with line and line. So this is right angle triangle, and when we'll rotate by this will again become a right angle triangle. I should consider this as a right angle triangle. Okay, and in between we will be having something like this broken line. Okay, and we'll connect this line with this one. Okay, and now what should we do is that we should put something A B C D. We will put some nomenclature A B C D E F. Okay, so in triangle ADF, if you see the triangle ADF, what I wanted to say is that we'll get something like sine A plus B should be perpendicular. This right angle is perpendicular by hypotenuse. So perpendicular is DF and the hypotenuse is AD. If you see DF is nothing but D
plus EF, and this is divided by AD, and we can further break it into two parts, D by AD plus EF by AD. Further going, we have D, we will divide by DC, divide and multiply by DC upon AD plus we have EF. EF is equal to CB, yes. So we'll write EF. If we divide by AC and multiply by AC AD, okay, it will work. We'll divide by AC and multiply by AC, and we have AD already at the bottom. D by DC. If you want to see D by DC, DE, see, this is A, this is 90 minus A, this is A, this is 90 minus A, so this is A. So D by DC, if you see, it is nothing but cos A, and DC by AD, DC by AD is nothing but sin B, and EF is not, EF is equal to BC. So BC by AC is sin A, and AC by AD is cos B. So we can simply say that sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B. Yes, this is our result. This is our result. So we will do something like this. Okay, okay. Moving to next slide. In place of plus b, we have kept minus b. In place of plus a minus b, we have done minus b. So we know that if we put sin a cos minus b plus sin minus b cos a, this is nothing but sin a cos b. Cos minus theta is cos theta, sin minus theta is minus sin theta, sin b cos a. So if you want it to write somewhere like this, if you are looking to write somewhere like this, we can write it like this, yes. Sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos a sin b. So this is the output we got, yes. Now moving ahead,
cos A plus minus B. Okay, cos A plus minus B. So we have cos A plus B as cos A cos B minus sin A sin B. And if we have cos A minus B, cos A minus B, we will write it as cos A cos B plus sin A sin B. So we will keep them in a rectangle. Okay. Now, if you want to remember it as a formula, we will put it as cos square B minus cos square A. Cos square B minus sin square A. Okay. We need not be worried about this formula. I will give you the proof. Cos A plus B is what? Cos A cos B. If you want the proof for this one, what will happen? We have sin A plus B. So in place of A, can we write pi by 2 minus A, pi by 2 plus A? So uh, in previous formula like sin A plus B, if you to put A equal to pi by 2 plus A, can we say it is cos A plus B? So in place of A, we will put pi by 2 plus A. It will become cos A cos B. Sin pi cos pi by 2 plus A is minus sin. So this is from where we have done. We have kept in sin A plus B, put A equal to pi by 2 plus A, and in this also pi by 2 plus A in sin A minus B, put A equal to pi by 2 minus A. Okay, so if you put pi by 2 minus A, it will become the same thing, like we have some in this formula, we'll put it and we'll get this one. Okay, if we have cos A plus B, which is cos A plus B minus sin A sin B, and cos A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. So we can simply say that this is A minus B into A plus B. If you would like to open it, it is nothing but A square minus B square. Okay. Now what will happen is that in place of cos square B, I want to keep it 1 minus sin square B.
So I wanted to keep it as 1 minus sine square b. This is sine square a. This is sine square b. If you open it, it is cos square a minus cos square a sine square b. And in place of sine square a, if you put 1 minus cos square a, it will work. Yes. 1 minus cos square a sine square b. So let's expand it. This is minus sine square b plus cos square a. So it is, what you are going to find is that cos square a and minus sine square b. This is going to stay. Or you can say it is cos square b minus sine square a. What we are going to understand is that in cos a plus b we have something in cos and then sine. So when it is multiplied, it will be something square in b minus sine. Cos sine. Okay. This is what we are going to understand. This could be also written as cos square a minus sine square b. Okay. We will underline or we will keep that in the box, and from the box we'll get it. Yes, this is the box. So we are getting in the box. So sine a plus b. If you want to write it, we'll simply write sine square a minus sine square b, or cos square b minus sine square cos square b minus cos square a. Okay. If you don't know, you will just simply expand it and do a plus b into a minus b. We'll expand and we'll get something like this. Now this is 10 a plus b, a plus b minus b. Okay. So if you want to go like this, 10 a plus b, we can write it simply as sine a plus b upon cos a plus b. So sine a plus b, if you remember, it is sine a cos b plus cos a sine b. This is cos a cos b minus sine a sine b. We'll divide by sine a sine b on the bottom, and in numerator and denominator divide numerator by sine a sine b and denominator by sine a sine b. So it will become, or it is better we divide by cos a cos b. Divide by cos a cos b in numerator and denominator will give us tan a plus tan b upon 1 minus tan a
tan b. Okay, so this is our final formula. Similarly, if we go tan a minus b, we'll put b equal to minus b. So tan of minus theta is minus tan theta. So it will simply come out with tan a minus tan b upon 1 minus 1 plus, because minus tan theta will come out to be minus minus plus tan a tan b. Just circle this, or what, keep it in the box. Okay, so we got this. So in this lecture our aim is to first normally go through this thing like question solving skills. Now we have only questions, so remember the formula and go through the question solving skills. We have to follow the question solving skills. So try this question. I am giving you few seconds. Kindly try this question. I will be giving you 2 to 3 minutes. Just try. Okay, so are you all trying? Just try this. Okay, so are you all trying? Just try this, okay? So I will be solving this question, okay? Now we have only question solving skills. We are left with only question solving skills. So if I proceed, we have tan A, tan B, 2. Which of the following is correct? Which of the following is correct? How should we resolve it? We'll get cos A, cos B. Okay, wait. Cos A minus B is something like cos A, cos B plus sin A, sin B, which is equal to 3 by 5. Okay, we are given with tan A, tan B. If we take cos A, cos B common, we are going to get 1 plus tan A, tan B, which is equal to 3 by 5. From here, if we put the value of tan A plus tan A into tan B, we'll get this as 3. So cos A, cos B is going to be 3, 3 cancel, 1 by 5. Okay, and if we put cos A, cos B 1 by 5, we are going to get sin A,
Sin B equal to 2 by 5. Okay, we are going to get 2 by 5. So if you would like to see sin A sin B is 2 by 5, cos A cos B is 1 by 5, sin A cos B. We are not aware of this sin A cos B. We need to check that. But for now, if you see cos A plus B, it is cos A cos B minus sin A sin B. So cos A cos B is 1 by 5, sin A sin B is 2 by 5. So it is going to be minus 1 by 5. Okay, okay, got it. So in case we would like to find sin A cos B, how would we find sin A cos B? Because it is difficult. Okay, sin A sin B is equal to 2 times of. Okay, how to find cos B? For that we will have to think something different. Something different in the sense, if we go to sin A plus B, we have sin A. We have to find the value of this. Okay, what will happen? A plus B will come out to be cos inverse minus 1 by 5. Okay, so A plus B is more than 90 degree. We can say this. Okay, and A minus B is cos inverse 3 by 5. Okay, if we add them, then A will come out to be 1 by 2 of cos inverse minus 1 by 5 plus cos inverse of 3 by 5. And if we subtract it, B will come out to be 1 by 2 of cos inverse minus 1 by 5 minus cos inverse 3 by 5. Okay, and we have to do simply, do we have space? We should have a space here. Okay, okay, we do sin A plus B is equal to, if we add both of them, this is going to get cancelled, and it is nothing but sine of cos inverse minus 1 by 5. Okay, it will become pi plus cos inverse 1 by 5, pi minus, so sin pi minus is sine cos inverse minus 1 by 5 plus 1 by 5, and cos is 1 by 5, so it will become, if you go in the triangle, in a triangle if you go, cos is base upon hypotenuse, so this will become root 24, so sine inverse root 24 by 5, so it will come out to be root 24 by 5. Okay, so this is not correct, but our basic knowledge will say that we have to see only sin A plus sin A sin B cos A plus B. We don't have to go here and there. If we go, we are able to find, but it will come in later part. It will come in much later part. After 3 months we'll get this thing. Okay, so moving ahead, it is cot A plus B cot A minus B. So cot A plus B is nothing but 1 upon tan A plus B
If you want to write, it is simply tan A plus tan B 1 minus tan A tan B, okay? And we have cot A minus B. If you want to convert this into cot, divide whole by tan A tan B. You will get cot A cot B minus 1 upon cot A plus cot B. This is simply 1 upon tan A minus B. So this is going to be somewhere cot A cot B plus 1 cot B minus cot A. So this is the formula. We simply kept B equal to minus B. Tan A minus tan B divided by, it is correct, yes. Okay. Now we have sine A plus B plus C. So this formula we will not remember. We will prove it. This formula we will not remember. We will do sine. We will not prove it. Okay. We will not remember it. We will prove it. A plus B plus C. We will keep this in a group. Okay. Can we say it sine A cos B plus C plus cos A sin B plus C? Yes. Now we have sin A, cos will open as cos B, cos C minus sin B, sin C plus cos A, sin B, cos C plus cos B, sin C. Further opening will get sin A, cos B, cos C minus sin A, sin B, sin C, cos A, sin B, cos C plus cos A, cos B, cos C. So this is what we are going to get. So if you want to write it, it is nothing but sin A, cos B, cos C plus cos A, sin B, cos C plus cos A, cos B, cos C minus sin A, sin B, sin C
Okay, we'll put this in a rectangle. Okay, this is important. Or this is not looking good. It is simply like this. Okay, if you want to it to keep it in a circle, rectangle. Mhm, mhm. Moving to next slide. So I have few values written, remembered. Now I will just simply put it here. Okay. Now what is the value of this going to be? This, if I tell you cos A plus B plus C, it is nothing but cos A cos B cos C. We can prove it. Okay. Minus cos A sin B sin C minus sin A cos B sin C minus sin A sin B cos C. Okay. So you can prove it. Okay. You can prove it. You can prove it. Now if we have 10A plus 10B plus 10C, I will tell not to prove this one. It is simply to remember. Simply to remember as S1 minus S3 upon 1 minus S2. S1 minus S3 upon 1 minus S2. So S1 is sum of tan of A, B, C taken one at a time. S2 is sum of tan of A, B, C taken two at a time. S3 is sum of tan of A, B, C taken 3 at a time. Okay. So we can simply say that S1 is tan A summation of tan A. S2 is summation of tan A is nothing but tan A plus tan B plus tan C. Summation of tan A tan B is tan A
tan B plus tan A tan C plus tan B tan C. Okay, you should be knowing. Okay, I'm writing this. Tan A tan B tan A tan C plus tan B tan C. Okay, we have more space. Okay, so and some S3 is what? Tan A tan B tan C. Okay, taken three at a time. In this case, we are going to follow the same thing, same general rule. It is S1 minus S3 plus S5 minus S7 plus dot 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 whole divided by 1 minus S2 plus S4 minus S6 plus S8 minus dot dot dot. So this is what we are going to do. We can simply say that Si is summation of tan of angles taken ith at a time. Okay, that's all. Now we are on problem solving skills. I think we have problem solving skills now. Problem. Okay, so we are filled with problem. So we'll enjoy solving. Okay, we have only problems now. Question solving skills. We have question solving skills. So let's start the question solving skills. Okay. So we'll start question solving skills. Okay. So one, sine 45 cos A. So sine A plus B, sine A plus, okay, sine A cos B, cos A sine B. So it is simply sine A plus B, which is sine of 90 degree plus A minus B. So sine 90 plus theta is cos A minus B. Very simple question. Second, tan A tan B is minus 1. Okay. So if you remember the formula of tan A plus B, it is nothing but tan A tan B
upon 1 minus tan A tan B. Okay. Yes. And if you see the formula of tan A minus B, it is tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. Yes. So if tan A plus tan B is minus 1, can we say that it will tend to infinity? And tan A minus B is infinity when A minus B is pi by 2, A minus B is pi by 2. Okay. So what will happen if we check this is A? We consider A equal to 3 pi by 4 plus theta and B equal to pi by 4 plus theta. So A minus B is pi by 2. Yes. So my saying is that if A minus B is pi by 2, then tan A tan B will have to be equal to minus 1. Okay, so if tan A minus B is equal to pi by 2, then tan A tan B will be minus 1. Okay, so in order to make you understand, I have to go through this thing. Okay, now we are on something this sin alpha is given. We have to find cos alpha plus beta. So routine problem. It is a routine problem. Cos alpha plus beta is cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Okay, so what will happen? We know cos alpha, we know sin alpha. So first go through a triangle. Trigonometry is all about triangle. Yes, consider this angle as alpha. So cos alpha is 2 root 2 3, and if we go by Pythagoras it is 3 square minus 2 root 2 whole square, which is 1. If we go with the triangle second triangle, this is beta, so it is 4 by 5 and it is 3. Okay, so if we would like to see cos alpha is 2 root 2 3, and cos beta is 3 by 5 minus sin alpha. Sin alpha is 1 by 3
and sine beta is 4 by 5. If you see, it is nothing but 6 root 2 minus 4 by 15. This is all. We got it. Yes. Can we move ahead? Yes, sir. We can move ahead. Cos 375 degree. Cos 375 degree. Okay. Can we write it cos 360 degree plus 15 degree? Can we further say that it is equal to cos 360 plus theta is cos theta? Can we further say that it is nothing but cos 45 degree minus 30 degree? So we got in the form of a minus b. Can we say it is cos a cos b plus sin a sin b? So cos a meaning cos 45 degree cos 30 degree plus sin 45 degree sin 30 degree. Cos 45 is 1 by root 2. Cos 30 is root 3 by 2. Sin 45 is 1 by root 2. Sin 30 is 1 by 2. Overall it is root 3 plus 1 by 2 root 2. In further class we will tell you that there are few values that we have to remember. We can say that cos 15 degree is root 3 plus 1 by 2 root 2. We should be remembering this value, okay? Right now I showed you the proof, but we should remember it. I think we got it. Yes, our work is to remember it. So I think I can see that two people are online, so they can just comment what they want. So we are going to lecture 2, okay? So it is simply lecture 2. Prove that 1 plus tan a by 2 equal to tan a cot a by 2 minus 1 equal to sec a. Okay, prove this. Prove this 1 plus, I think, is something missing or it is correct. Okay, I want to just tell you that we know that tan a minus a by 2, tan a minus b is equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So this is simply tan a by 2. If we go further, tan a by 2 is equal to tan a by 2 plus tan a tan square a by 2. Okay, I am looking on this question, just trying to solve it. Okay,
How could it work? Okay, how could it work? Cot will be okay. Cot will be 1 by 10a. 10a will come 10a minus 10a by 2. Okay. We will divide by 10a by 2 both the side. Okay, divide by 10a by 2 both the side. We are getting 10a cot a by 2 minus 1 equal to 1 plus 10a 10a by 2. We got it by dividing 10a by 2 both the sides. Okay. Now we have to get it sec a. Sec a. Okay. Sin a, sin b, cos a, cos b. Okay. Okay. If you would like to see, it is nothing but sin a by 2 upon cos a by 2. Sin a sin a by 2 cos a cos a by 2. On taking LCM, we are getting cos a by 2 plus sin a sin a by 2 whole divided by cos a cos a by 2. This is cos a cos b plus sin a sin b, which is nothing but cos a minus cos b, which is cos a by 2 upon cos a by 2, which is going to be sec a. Okay, we got the answer. We got the both the proof. Okay. Hello, Ayushman ji. Hello. So I want you all to solve this question. This is question one. Sin A cos B cos A sin B. So if you remember, sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. So if you put, it is nothing but sin A plus B, which is sin 60 degree, which is equal to root 3 by 2. Second one, cos A cos B sin A sin B. Cos A plus B, or we'll say cos A minus B, which is cos A cos B plus sin A sin B. So cos A minus B is cos 60 degree, which is equal to 1 by 2. Yes, we got it. It was simple formula based. A plus B is 45 degree, then this should be this, prove that this is 2. Okay. If we expand it on
expanding 1 plus 10a 1 plus 10b equal to 2. We are going to get 1 plus 10b plus 10a plus 10a 10b. From here we get 10a plus 10b. This side if we move it is 1 minus 10a 10b. If we divide both the side by 1 minus 10a 10b, we get 10a 10b whole divided by 1 minus 10a 10b equal to 1, and we can say that it is nothing but 1045 degree. And if we say that it is 10a plus b, so a plus b is 45 degree. Yes, hence deduce. Now we are told that hence tell me this thing. So if I put a equal to b, then 2a will be equal to 45 degree, a will be equal to 22.5. So in above this equation 1, we are 2 10a upon 1 minus 10 square a, which is 1. Further solving, we have 2 10a equal to 1 minus 10 square a. We have 10 square a plus 2 10a minus 1 equal to 0. If we go by quadratic, we'll get 10a equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2. It is nothing but minus 1 plus minus root 2. Since a is acute angle, so tan of acute angle is positive, so we can say it is root 2 minus 1. So we could find the value. So remember, we have to remember, yes, this value we have to remember. Tan 22.5 degree is equal to root 2 minus 1. We have to remember this. Okay, I think we got it. Hello Gojo. Hello Gojo, yes. So we can proceed ahead.
So eliminate theta from the relations a sec theta is equal to 1 minus b tan theta. Okay, and we are this is 1, this is 2. We have a square sec square theta equal to 5 plus b square tan square theta. In equation 1, squaring both the sides, we get a square sec square theta equal to 1 plus b square tan square theta minus 2b tan theta. So from equation, if we add 4 both the side, add 4 subtract 4, can we say that a square sec square theta plus 5, I will write in the step, 5 plus b square tan square theta minus 4 minus 2b tan theta. So can we say that this value is equal to 0? So simply we can say that 2b tan theta equal to minus 4. We can say b tan theta is equal to minus 2. So now in equation 1, if we put b tan theta equal to minus 2, put 3. So we got a sec theta equal to 1 plus 2, 3. Okay. So a sec theta is this and b tan theta is this. Okay. Now again tan theta is equal to minus 2 by b. Tan square theta is 4 by b square. Okay. Okay. This is fourth. Fifth, sec theta is equal to 3 by a.
Sec square theta is equal to 9 by a square. So 5 minus 4 is sec square theta minus tan square theta is 9 by a square minus 4 by b square. This is 1 equal to 9 by a square minus 4 by b square. Okay, so we could eliminate the theta. Moving next, alpha beta are the solution of cos a cos theta b tan theta, then so that cos alpha plus beta. Is this okay? Okay, we can write a cos theta is equal to c minus b sin theta, squaring both the side. Squaring both the sides. It is a square cos square theta is equal to c square plus b square sin square theta minus 2bc sin theta. Now it is better to convert cos square theta into 1 minus sin square theta. Okay, 1 minus sin square theta c square b square sin square theta minus 2bc sin theta implies it is a square minus a square. We'll get a square plus b square sin square theta minus 2bc sin theta plus c square minus a square, which is equal to 0. So sin theta could be minus b plus minus root under b square minus 4 ac. Okay, upon 2a. bc plus minus b square c square minus a square c square a to the power 4 b square c square minus a square b square upon a square plus b square. Further solving,
Sine theta is BC plus minus root under A square common B square plus A square minus C square upon A square plus B square. Okay, we could get the value of sine. In case we would have gone with cos, sending this side, we would have got every equation in cos. Okay, we got sine. Let's try with cos. Okay, so it's b square sine square theta is equal to c square a square cos square theta minus 2ac cos theta. So we will get simply a square plus b square cos square theta minus 2ac cos theta plus c square minus b square equal to 0. So the difference we got is simply it was b, it was a, it is a, it is c. So cos theta will come out to be ac plus minus in place of a we are going to get b, I think, and a square plus b square minus c square upon a square plus b square. So cos alpha plus beta is nothing but cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. So alpha is this plus beta is minus, and we can simply say that we have a square plus b square whole square and something like a square minus b square a square plus b square, which is going to be a square minus b square upon a square plus b square. So we are going to have something like this. Okay, just try it once at your home in your study hour, just try it. Okay, just try it. Moving next. Sec theta tan theta. Okay, this is something we have done earlier also. Sec theta tan theta is alpha, then sec theta minus tan theta is 1 by alpha. This is property. This is a property you should be remembering. Okay, so my saying is that if we add them, we are going to get value of sec theta equal to 1 by 2 alpha plus 1 by alpha. Here alpha is 2 by 3. So can we say it is 1 by 2? 2 by 3? 3 by 2.
13 by 12. Okay, so we got the value of sec theta. Now we will have a triangle. So theta is this, sec theta is what? Hypotenuse upon base. So from Pythagoras theorem, if this is L, L will come out to be root under 13 whole square minus 12 whole square, which is 5. So L will be 5. So sine theta will be perpendicular by hypotenuse. Okay, so sec theta minus sine theta is equal to 13 by 12 minus 5 by 13. Yes, which is 169 minus 60 by 156. It is 109 by 156. Okay, so everyone, you should be knowing that in trigonometry we have 8 lectures. So currently we are on second lecture. Okay, moving ahead. So this is how we solved it. Okay, this property is important. It will come in exam. Okay, this property is important. It will come in exam. Okay, so we are moving ahead. Now we have sec square alpha plus beta. We have to find sec square alpha plus beta. So we can simply say it is 1 plus tan square alpha plus beta. Yes, first point. Second, tan alpha plus beta is tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. So it is m plus 1, 1 plus 1 upon 2m plus 1, 1 minus m upon m plus 1 into 1 upon 2m plus 1. Solve it. We'll solve it taking LCM. M 2m plus 1 plus m plus 1 upon m plus 1, 2m plus 1 minus m. Further solving 2m square, 2m plus 1. This is 2m square plus m plus 2m plus 1 minus m. This is 2m square plus 2m
plus 1. This is 2m square plus 2m plus 1, which is equal to 1. Okay, so we got 1. So now sec square alpha plus beta is nothing but 1 plus 1, which is 2. Okay, very simple. Very simple. We substituted the value and we kept on solving. So finally we got this. Yes. So finally we got this. Now we are on the next question. No, our topic for the day is complete. So we are trying to increase our problem solving skills. So if A, B, C are in GP, based on our class 10th level knowledge, we can say that B square is equal to AC based on our class 10th knowledge. So if sin A cos A tan A, sin A cos A tan A, they are in GP. So we can say that cos square A is equal to sin A into tan A. So we'll simply get cos square A equal to sin A into sin A upon cos A, which implies cos cube A is equal to sin square A. And further going, we have cos cube A equal to 1 minus cos square A. We have cos cube A plus cos square A equal to 1. Now in this we have to add 10 both the sides. So we have cos cube A plus cos square A plus 10 is equal to 11. Okay. We have this question. A cos theta plus B sin theta. Okay. What can we do? If we square and add A square cos square B square 2AB 2AB. Okay. Okay. If we have one as A cos theta plus B sin theta equal to 3, and second we have A sin theta minus B cos theta equal to 4. We'll square first and we'll add with the square of second. So we are going to get A square cos square theta plus B square sin square theta plus 2AB cos theta sin theta 9, and the second one is A square sin square theta B square cos square theta minus 2AB cos theta sin theta equal to 16. Well, we are adding both of them. Yes.
Yes, we'll get a square cos square plus sin square as 1, b square cos square plus sin square as 1, this cancelling, and 16 plus 9 is 25. Okay, now we are on the next question. So this is a type of one shot also, and this is a type of lecture also. नवाब गेमर, नहीं 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 नहीं, नहीं, वो डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम लोग कॉस क्यूब का फॉर्मूला लगाए, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर हम ये देखें है ना इधर, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1 अपॉन मल्टीप्लाई विथ टेन ए एंड डिवाइड विथ टेन, इट इज 1 प्लस 10 ए, और इसको मल्टीप्लाई विथ 10 बी डिवाइड विथ 10 बी, 1 प्लस 10 बी। If you remember, in one of the question we did something like 1 plus 10a into 1 plus 10b is equal to 45 degree. In one of the question we have done that if a plus b is equal to 45 degree, tan a plus 1 into 1 plus 10b is equal to 2. So what will happen? It is right now we have a plus b equal to 180 plus 45. Okay, we have 180 plus 45. So if we put a equal to 180 plus theta, if we put a equal to 180 plus theta and b equal to 45 minus theta, we are still going to get the same. I think we are going to get this value as 1 by 2. That this is what I am trying to say. Because after solving this we are getting that tan a plus b is equal to 1, which is equal to tan 45 degree or tan 180 plus 45 degree. So a plus b could be this, a plus b could be this. So in both of them the values are same only. So this is going to be 1 by 2. I think we solved somewhere here. I'm just showing you. We solved it here. So here we are finally getting a plus b equal to 45 or 225 degree. This is what we are getting. So this is the repetition of the previous question. So we should move ahead. In this question, the value of 10 to 102, okay. This is a plus b. Can we say it something like 10a plus b is equal to 10a plus 10b upon 1 minus 10a 10b
If you go cross multiplication, it is tan A plus B minus tan A tan B tan A plus B equal to tan A plus tan B. Okay, so we have this thing. We are keeping A equal to 203 degree, B equal to 22 degree, A plus B will be 225 degree, which is nothing but 180 degree plus 45 degree. Okay, so what will happen? What will happen is this: we will substitute this here. Put 2 in 1. Put 2 in 1. So it is 10, 180 plus 45, which is 1. And we have tan A, tan B, this is also 1. And we have tan A, tan B. So we can simply say that 1 is equal to tan A, tan B, tan A, tan B, which is tan 203 degree, tan 22 degree, tan 203 degree, tan 22 degree. This is going to work. Okay, this is going to work. Now in this is some question from exercise 2. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, we have 12 questions still left. So if tan A is less than 0, then if tan A is less than 0, uh, we are given that in a triangle A plus B plus C is 180 degree. If tan A is negative, that means A is bigger than 90 degree. That will tell us that B plus C is less than 90 degree. Okay. So if one of the angle is 45 degree, the other one is less than 45. So tan B into tan C will be less than 1. Yes. If B is 45 degree, C is less than 45 degree.
So 10b into 10c, this is 1, and 1045 is less than 1 into something less than 1 is equal to less than 1. Yes, case 1. Case 2, if b is more than 45 dB, still c will be less than 45 dB. So 10b into 10c, so it is more than 1, it is less than 1. So in this case it is unpredictable, but we have to give some prediction. Yes, so it is, we can say that this is near to 90 minus more than 45, which is less than 45. Okay, okay, we take some number 88 and this is 45, 46, and that will be 32. This is the case we could verify. Okay, so 10b into 10c is less than 1, we can say that. One of the case we can say that. Second case, this is more than 1, this is less than 1. If we go to the graph, 10x, this is 45. This slope is less, this is decreasing. So if we move this way, this will be less decreasing. It will be near to 1 only. This will be near to 1 only. And this will be more than 1 very fast. Okay. One of the cases satisfied. Second, if we are going through this way, we are facing some problem. Let's go through some different way. 10 180 is 0. 10 a plus b plus c is 180, which is equal to 0. And we remember it is nothing but s1 minus s3, 1 minus s2. So we can say that 10a plus 10b plus 10c is equal to 10a, 10b, 10c. This is 10b, 10c is equal to 1 plus 10b plus 10c upon 10a. So b plus c, and this is a. A is negative. This will be negative, negative. 1 plus less than 0 plus less than 0. This will be negative and it will be some fraction. So it will get multiplied, multiplied. So overall, this is going to be negative. More than 1, more than 1. This is going to be negative. So if it is less than 0, it will be less than 1. Okay, if we go by this way, we can find something. See, 10b will be some number and 10a will be some fraction.
So fraction multiplied with some number, fraction multiplied with number. This will be less than 0, this will be less than 0. So 1 plus less than 0 is less than 0 and less than 0 is less than 1. Hence 10b dot 10c is less than 1. And if one of the case is correct, two, two case can't work, or we have to see something more. This is very good question. We have to see something more. Okay, we'll keep it and we move ahead. Okay, we will move ahead. Sin alpha equal to 1 by 2, cos theta equal to 1 by 3. Then the value of alpha plus theta will lie in the interval. So alpha is 30 degree or 50 degree. 30 degree or 150 degree. Theta will be, so cos theta is what? 1 by 3. If you see the graph of cos theta, so 1 by 3 will be here, 1 by 2 will be here. Okay, so 1 by 3 angle is less than, theta is less than pi by 3. Okay, and theta is, the value is 1 by 3. 1 by 3 is here. Okay, wait. Okay, wait. What? There is something wrong. Okay. This is 1 by 3. This is 1 by 2. So cost is decreasing. Like with the increase of x, theta cost will decrease. So theta is more than 60 degree. Theta is more than 60 degree. And if you see theta in this case, it is, when it is 1 by 3, theta will be less than minus 60 degree. Okay. So if we add alpha plus theta, we can have pi by plus pi by 6 plus pi by 3. It could be more than pi by 3 plus pi by 6, which is equal to pi by 2. It is more than pi by 2. Alpha plus theta
is less than pi by 6 minus pi by 3, which is approximate minus pi by 6. Alpha plus theta is more than 5 pi by 6 plus pi by 3, which is approximate 210, 7 pi by 6. Alpha plus theta is less than 5 pi by 6 minus pi by 3, which is approximate pi by 2. So if we see alpha plus theta is more than pi by 2, more than pi by 2, so theta and alpha are both acute. That means if we forget negative part, forget negative part, forget negative part. So we have pi by 2 bigger than pi by 2, and we can say that it is bigger than pi by 3, less than pi by 2. So pi by 2 plus pi by 6 is what? We'll reject this one also because it is acute. So we have only this valid. If we add 90 plus 630, 120, 2 pi by 3, it is only acute. So we'll reject the other one. So this is the correct, the option B is correct. For this I have left more space, okay. Sine. So any student having any doubt kindly ask me, okay. अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मुझसे कृपया पूछे, वो कृपया मुझसे पूछे. Sin A by sin B is equal to root 3 by 2, cos A by cos B is equal to root 5 by 2. तो tan A plus tan B is equal to क्या होगा, है ना. तो नॉर्मली ये करना है क्या, साइन ए को साइन बी के फॉर्म में लिख दीजिए और कॉस ए को कॉस बी के फॉर्म में लिख दीजिए. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 3/4 साइन स्क्वायर बी एंड cos square A is equal to 5/4 cos square B. We will add both of them. Add both of them. We'll get 1 equal to 3/4 plus 1/2 cos square B. So cos square B is equal to 1/4, 1/2, 1/2
एंड कॉस बी इक्वल टू प्लस माइनस, तो ए और बी एक्यूट है तो प्लस 1/√2 ही होगा, प्लस 1/√2। कॉस बी प्लस 1/√2 हो गया, मतलब कॉस स्क्वायर 5/8 हो गया, तो कॉस ए √5/2√2। कॉस बी 1/√2 है, तो साइन बी का क्या होगा, 1 साइन बी, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/2 साइन बी इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन बी 1/√2 हो गया, तो साइन ए √3/2√2 हो गया, तो टेन ए प्लस टेन बी, ये क्या हो गया, साइन ए बाय कॉस ए साइन बी बाय कॉस बी, सो साइन ए बाय कॉस ए कुछ नहीं बस √3/√5 हो गया, और साइन बी बाय कॉस बी, साइन बी बाय कॉस बी 1 हो गया, तो इसका सिंपल वैल्यू है √3 प्लस √5/√5। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 cos x 2 cos 3x इक्वल टू cos y 3 cos x sin x प्लस, शायद हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है, a cos थीटा प्लस b sin 3 थीटा इक्वल टू cos y a sin थीटा, ये cos थीटा है ना, प्लस b sin 3 थीटा इक्वल टू sin y। ये 1 है, ये 2 है, स्क्वायर 1 एंड ऐड विथ स्क्वायर ऑफ सेकेंड। तो सारे स्टूडेंट हमें बताते जाएं कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। स्क्वायरिंग में तो ये होगा, ये सिंपली ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 3 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस 2ab साइन थीटा साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई add both of them a square plus b square plus 2ab, ये cos थीटा है cos 3 थीटा है प्लस साइन थीटा है साइन 3 थीटा है, और ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, cos a cos b प्लस साइन b इज नथिंग बट cos 3 थीटा माइनस थीटा, जो 1 के बराबर है।
अब ये हो गया। ए क्या है हमारा यहाँ? ए वॉज इक्वल टू 3, बी वॉज इक्वल टू 2। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस 2x हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गया कॉस 2x इज इक्वल टू -12/12 विच इज -1। ऑप्शन ए। ये बहुत सरल क्वेश्चन हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, मैं जो क्वेश्चन क्लास में कर रहा हूं, इसे क्लास में ना करके घर के लिए याद रखें। मतलब मैं अभी आपको सारा क्वेश्चन डिस्कस भी कर दे रहा हूँ। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। बट ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। आप पहले बिना सॉल्यूशन देके क्वेश्चन करो, नहीं आए तो सॉल्यूशन देखो। तो मैंने पहले पढ़ा दिया, अब मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो। मतलब पहले क्वेश्चन ट्राई करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। cos अल्फा प्लस cos बीटा इज ए, sin अल्फा प्लस sin बीटा इज दिस, एंड अल्फा माइनस बीटा इज थीटा। सिंपली स्क्वायर एंड ऐड, स्क्वायर एंड ऐड। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 1 + 1, ये आएगा 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सिंपली 2 उस साइड जाएगा और 2 से डिवाइड भी होगा, और cos ये हो गया सिंपली cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर का -2 इधर आएगा और डिवाइड बाई 2 होगा। अब cos अल्फा माइनस बीटा इज 2 थीटा, तो ये cos 2 थीटा हो गया। लेकिन हमारा सॉल्यूशन निकल पा रहा है? हमारा सॉल्यूशन निकल पा रहा है। हमें चाहिए क्या? 9। हमें चाहिए cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम इसे लिख देते हैं cos 3 थीटा माइनस थीटा। यहां तक तो सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे क्या होगा? cos थीटा का तो वैल्यू आ गया। अब cos 3 थीटा और cos थीटा का वैल्यू लाना है। ये कैसे होगा? -2 + 3 तो आ जा रहा है। अगर cos 3 थीटा को एक्सपेंड करें
तो कॉस टू थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, और इधर साइन टू थीटा। तो क्या करें, स्क्वायर करके ऐड किया, एक यही सॉल्यूशन बचा था, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? सो इसे हाफ एंगल में कर सकते हैं क्या? हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? थोड़ा देख लें। कॉस टू थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर अगर 1 - कॉस स्क्वायर लिख दे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। और इधर से अगर कैलकुलेट किया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 होल डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो कॉस 3 थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, एक अभी के लिए हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म करते हैं कि आगे जाकर कॉस 3 थीटा होगा 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। ये आगे हम फॉर्मूला में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम अभी बेसिक से सॉल्व करें, जो हमारा बेसिक है उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के बाद वो होगा साइन थीटा साइन टू थीटा होल डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2/2। और इधर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा। मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया। मतलब इसका फॉर्मूला ही याद रखे तो सही होगा, है ना, इस क्वेश्चन का। नहीं, आई एम ऑन, मैं लाइव ही हूँ, है ना। इसका कंटेक्स्ट मतलब हम फॉर्मूला यूज करें, इसको प्रूव करके करेंगे हम लोग, आगे जाके इसको प्रूव करेंगे। अभी के लिए आप याद रख लो, अभी के लिए आप याद रख लो कि ये है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये है 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ -3 है। हम लोग इसे प्रूव कर देंगे, करेंगे नहीं, कर देते हैं, इसे प्रूव कर देते हैं ना। ये कॉस थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब देखिए,
ये कॉस थीटा हो गया, और ये होता है 2 cos² थीटा -1, और इधर है साइन थीटा। अगर 2 sin थीटा आप देखिए तो ये होगा 2 sin थीटा कॉस थीटा। फर्दर ये हो गया 2 cos³ थीटा -cos थीटा, और ये हो गया -2 sin² थीटा हो गया 1 -cos² थीटा cos थीटा। फिर इसको करें तो हो गया, इसको अब एक्सपेंड करके अगर आप करिएगा तो ये होगा 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया। ये ऐसा ही होने वाला है ना। तो फॉर्मूला याद करने पे जल्दी हो जाता है, और इधर स्पेस बाकी था, स्पेस मैंने दिया हुआ था ना। अब ये क्वेश्चन है, 2 cot अल्फा प्लस 1/sin² अल्फा। तो ये तो सिंपल ही हो गया, ये बहुत ज्यादा सिंपल हो गया। एक 2 cot अल्फा और 1/sin² अल्फा इज नथिंग बट cosec²अल्फा। फर्दर देखें तो ये 2 cot अल्फा प्लस 1 + cot² अल्फा। फर्दर देखें तो ये cot अल्फा +1 होल स्क्वायर है। तो ये दो साइंस के बाहर आएगा, प्लस माइनस cot अल्फा +1। अब अल्फा के बेसिस पे ये प्लस होगा या माइनस होगा। साइन आउट ऑफ स्क्वायर रूट will be decided based on the domain of alpha। ओके, सो अगर बोले तो कॉट अल्फा का थोड़ा ग्राफ देख सकते हैं। π/2 पे ये 0 हो रहा है, तो कॉट अल्फा का ग्राफ कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है। तो ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। तो हमारा बोलना है कि 3π/4 इधर आएगा और पाई इधर आएगा। 3π/4 पे ये -1 है, 3π/4 पे ये -1 है। ओके, और 3π/4 से पाई के बीच में जाइए तो अल्फा 3π/4 से पाई के बीच में है। ओके, तो कॉट अल्फा विल बी बिगर देन -1। कॉट अल्फा विल बी लेस देन -1, यस, क्योंकि यहाँ तो लेस देन -1 ये निगेटिव साइड है। तो कॉट अल्फा +1 विल बी लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो हम निगेटिव साइन से बाहर लाएंगे, तो हमारा ऑप्शन बी हो गया करेक्ट।
समझ गए? समझे कि नहीं समझे? सो वी हैव नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो सम S1 इज इक्वल टू थ्री, जीरो। मतलब क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा अगर ये है तो टेन ए प्लस बी कर दें तो टेन ए प्लस टेन बी। मतलब इसको टेन ए टेन बी में नहीं ब्रेक करे, ये फॉर्मूला हम लोग आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। मतलब दिस वुड हैव बीन एडवांस क्वेश्चन फॉर दिस कैटेगरी, एडवांस क्वेश्चन फॉर दिस कैटेगरी। लेकिन टेन टू थीटा होगा टू टेन थीटा, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये एस वन माइनस एस थ्री है, ये हम लोगों ने किया है। एस वन माइनस एस थ्री, एस थ्री में तो हमें एक एंगल थीटा पता है, दूसरा एंगल थीटा पता है, तीसरा एंगल जीरो पता है, तो ये जीरो हो गया। तो एस वन मतलब तीन बार टेन थीटा टेन थीटा टेन थीटा ऐड होगा तो एस वन माइनस एस थ्री तो सब सेम है, और वन माइनस एस टू, ये इक्वल टू जीरो है। अगर हम टेन थीटा कॉमन ले सब में तो ये बचेगा वन प्लस टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा जीरो हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन टू में हमें ये बताना है कि टेन टेन थीटा इज नॉट जीरो, थीटा क्योंकि थीटो जीरो से बड़ा, और इसका पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, इसे अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करें। अल्टरनेट मेथड, अगर टेन थ्री थीटा देखा जाए तो ये टेन थीटा प्लस टू थीटा, ये टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा, वन माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा। तो अगर टेन थ्री थीटा दोनों साइड ऐड करें तो हमारे पास होगा टू टेन थीटा टू टेन थ्री थीटा माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा टेन टू थीटा टेन थ्री थीटा। आगे स्पेस है, स्पेस नहीं है, तो नॉर्मली टेन ये जीरो है, ये इक्वल टू जीरो है,
तो हम ये बोल सकते हैं कि टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। तो थीटा क्या होगा, थीटा हो जाएगा मतलब पाई बाई थ्री के बराबर भी हो सकता है, और पाई बाई थ्री क्या है, जीरो और पाई बाई टू के बीच में है। एक है टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू। तो एक हो सकता है, मतलब ये इसमें टेन थ्री थीटा कॉमन ले तो एक हो सकता है टेन थ्री थीटा, और एक होता है टू माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो या तो ये जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो हो सकता है ना। तो ऐसा है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, बताओ बताओ। अगर एलसीएम ले, ओके टेक एलसीएम, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस बी, दिस इज कॉस ए माइनस कॉस बी, दिस इज साइन ए प्लस साइन बी एंड साइन ए माइनस साइन बी। होल डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इज क्या होता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, क्या यही होता है ना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी विद माइनस साइन एड। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। दिस इज साइन ए, थोड़ा अलग हो गया। अगर एन ऑड हो तो ये तो जीरो हो गया, इफ एन इज ऑड तो ये जीरो हो गया, वैल्यू जीरो हो गया। इफ एन इज इवन तो वैल्यू देखना है ना। तो ये साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी। ये एन का पावर है। और अगर इवन हुआ, व्हेन इट इज इवन, व्हेन एन इज इवन, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो ये टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये साइन ए कॉस ए
साइन बी कॉस बी, साइन ए कॉस ए, कॉस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी हो गया। ओके, तो हम लोग को थोड़ा हाफ एंगल का फॉर्मूला, ये अभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया। ऐसे मैं इसको बता देता हूँ ये क्या हो रहा है। ये हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन ले ले और ये इवन नंबर है तो माइनस कॉमन ही होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन सी प्लस साइन डी का कुछ लग रहा है कंसेप्ट ना। तो ये साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो रहा है, और ऊपर में साइन ए प्लस बी है ऑलरेडी, और साइन ए माइनस बी भी है ऑलरेडी। तो ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बच्चा टू साइन टू द पावर एन ए माइनस बी, और ये हो गया टू कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई टू। और इसको अगर करें तो टू एन प्लस वन बाई टू कॉस एन ए प्लस ए माइनस बी बाई टू। तो ये नॉर्मली हो रहा है टेन, टेन या कॉट हो रहा है, ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी कॉन्सिल साइन कॉस टेन। जो टेन हमें तो टेन दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है टेन, ऑप्शन ए दिख रहा है। ए प्लस बी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी कॉस होगा, साइन बाई कॉस टेन होता है, कॉट नहीं होता। तो ये टेन हो रहा है, ऑप्शन बी हो रहा है, ऑप्शन ए हो रहा है। आप इसको थोड़ा चेक करें, हम लोग इसको फर्दर क्लास में लेंगे। ओके, अब साइन एक्स माइनस वाई जीरो टू पाई के बीच में है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, इट हैज बीन ऑलरेडी सॉल्व इट हैज बीन ऑलरेडी सॉल्व। अब ये एक अच्छा पैराग्राफ है जिसे हमें देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। P be the product of signs. P is product of sign. Sin A, sin B, sin C. Q be the product of cosine. Cos A, cos B, cos C. Then tan A, tan B, tan C क्या होगा? तो हम लोग को पता है कि इन अ ट्रायंगल tan A plus B plus C is tan pi equal to 0। तो हमें पता है कि S1 विल बी इक्वल टू S3। तो S1 हो गया समेशन ऑफ, ये टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी है, उसको हम लोग समेशन ऑफ टेन ए लिख देते हैं। ये होगा प्रोडक्ट ऑफ टेन ए टेन बी टेन सी, ये हो गया इसका मतलब।
तो हमें ये तो पता है कि ये पी बाई क्यू हो गया, पी बाई क्यू हो गया सी, ये इजीली हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना 10 ए, ये है समेशन ऑफ 10 ए 10 बी, ये हो गया क्वेश्चन, समेशन ऑफ 10 ए 10 बी। तो इसको कैसे सॉल्व करें बॉस? बॉस बताइए कैसे सॉल्व करें? एलसीएम ले ले। ओके, हमारे पास 10 बी कॉमन है इसमें से, इन दोनों में से, तो बच्चा 10 ए प्लस 10 सी, और बचेगा 10 सी 10 ए। अब मेरा ये बोलना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं S1 इसको सिंपली 1 प्लस क्यू के टर्म में लाना। तो हम लोग कुछ नहीं करते, एलसीएम लेते हैं, ये 10 बी हो गया, ये साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए, और ये हो जाएगा कॉस ए कॉस सी प्लस 10 ए 10 सी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस सी कॉस ए कॉस सी 10 ए 10 सी। तो साइन ए प्लस बी सी हो गया पाई माइनस बी, जो साइन बी हो गया है ना, 10 बी साइन बी प्लस साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी यहाँ रखा हुआ है। थोड़ा हम कुछ मेहनत करें तो काम होगा, थोड़ा मेहनत करें तो काम होगा। थोड़ा मेहनत करिए तो काम होगा, इसका कोई ट्रिक खोजना पड़ेगा, ट्रिक खोजिए, इसका कुछ ट्रिक खोजना पड़ेगा। ये तो हम लोगों ने नॉर्मली कर दिया था, 10 बी कॉमन लेके हम लोगों ने 10 ए प्लस 10 सी किया था। अब ये 10 सी है, 10 ए है, ये 10 बी, इसका एलसीएम हम लोगों ने लिया था तो वो था साइन ए प्लस सी कॉस ए कॉस सी,
इसे ब्रेक किया जाए, ब्रेक करिए, ब्रेक करिए। कॉस सी, कॉस ए, कॉस ए, कॉस सी, ये होगा कॉस ए कॉस सी, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी, साइन ए, कॉस बी, और कॉस बी इधर भी आ जाएगा। चलिए नीचे वाला तो क्यूब बन जा रहा है, ऊपर वाले पे दिमाग लगाते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ओके, और यहाँ पे साइन सी, साइन ए, कॉस बी है। तो इसको फर्दर करते हैं, फर्दर। तो 1 तो बच जा रहा है, क्यू भी बच जा रहा है। अब कॉस बी कॉमन लेते हैं, हमारे पास बच क्या गया, साइन सी, साइन ए, और माइनस कॉस बी। फर्दर इसको क्या करते हैं, कॉस बी तो कॉस बी रह गया, इसको लिख देते हैं पाई माइनस ए प्लस सी। तो पाई माइनस ए प्लस सी प्लस हो जाएगा, तो ये साइन सी, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस सी, ये रह गया, और हमारे पास क्यू रह गया। इसको फिर एक्सपेंड करें तो ये कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए, तो ये सिंपली 1 प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी हो गया, और हमारे पास क्यू नीचे है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस क्यू बाई क्यू। अगर पिछला पैराग्राफ देखें तो ये क्यू का वैल्यू कॉस ए कॉस बी कॉस सी था, है ना, तो ये हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे आ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ओके। तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये है। तो हमने ये देखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC, ये कुछ नहीं तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी होता है। ये प्लस होता है या माइनस होता है, कुछ डाउट है, तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, S1 माइनस S3, ये तो समेशन ऑफ एंगल हो गया, तो ये S3 हो गया। तो हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जहाँ पे 3 ABC ऐड होगा। 3 ABC क्या हो गया, साइन ए साइन बी साइन सी अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये हो गया, प्लस सम ऑफ द एंगल क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया S1 3 ABC, ये हो गया S1 इज इक्वल टू S3, तो S3 इज नथिंग बट P बाय क्यू, ये भी P बाय क्यू हो गया, और ये हो गया, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बी प्लस सी होल स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर होगा, ओके, ओके, ऐसा है। और ये तो हो रहा है 3 P/Q, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज ए प्लस बी प्लस सी
इंटू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ऐसा होना चाहिए क्या? सॉर्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा भूला जा रहा है। 10 क्यूब ए 10 क्यूब बी 10 क्यूब सी। ये होगा 3 10 ए 10 बी 10 सी प्लस 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी कर देते हैं ना, माइनस ए बी, क्योंकि प्लस है ना, प्लस में माइनस आता है। 10 बी 10 सी माइनस 10 सी 10 ए। ये हो गया। तो ये थ्री साइन प्रोडक्ट ऑफ ये 3 पी वाई क्यू हो गया। S1 इज इक्वल टू S3। तो ये प्रोडक्ट पी वाई क्यू हो गया। अब इधर क्या बच रहा है? ए बी सी। तो अगर इसको कर दें, अगर 2 AB 2 BC 2 CA कर दे तो ये इसमें ये हो गया। तो इसको अगर 10A प्लस 10B प्लस 10C होल स्क्वायर कर दे तो ये -3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ 10A 10B आ जाएगा। तो ये 3 पी वाई क्यू हो गया प्लस पी वाई क्यू हो गया। और ये पी वाई क्यू होल स्क्वायर हो गया। और इसका वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस Q/Q था। अगर आप पीछे देखें, इसका वैल्यू 1/Q/Q था। तो पी वाई क्यू को कॉमन ले, 3 प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -3Q -3Q स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा है। एलसीएम ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पी स्क्वायर -3Q/Q और यहाँ पी बाहर रह गया। तो ये हो गया P³ -3PQ/Q³। तो ऑप्शन डी मैच हो रहा है। तो ऑप्शन मैच हो गया। तो सारे बच्चों को मैं बोलूँगा ये सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। और आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। हम अगले लेक्चर में ये सब देखेंगे।